Okay, once again, good morning. Let's go for a rapid fire for everyone. What is the name of the Queen of Fairies in Midsummer's Night Dream? Samuel Johnson wrote Lives of Poets. How many poets were there? Petal, Falsehood and In Search of Happiness are two books written by. Preface to Lyrical Ballads and Lyrical Ballads. What is the difference? Spectator Club, Tatler. Like they were part of two magazines, Tatler and Spectator. There were two more magazines by Samuel Johnson. What is the name of the Chinese traveler who is writing letters to his friend in China? Name the writer who was locked by his landlady and Samuel Johnson saved him. There are so many questions asked which are not directly connected to syllabus. जो हम क्लास में कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी ज़्यादा है, जो आप यहाँ पढ़ोगे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ोगे. हम नॉर्मल सिलेबस नहीं पढ़ने वाले हैं, ऑर्डिनरी सिलेबस नहीं करेंगे. नहीं तो जो फ्रेंच जर्मन अलग से करवा रहा हूँ ना, उसको नॉन ब्रिटिश लिख के ना सिर्फ 20 राइटर एक साथ करा के छोड़ देता सारे मिला के. रैपिड फायर क्वेश्चंस में स्टार्ट करना है एंड यू विल टेल मी दिस 3 events that happened in restoration age. Dryden wrote a work about these things. Tell me. Fire. Annos Deus Maintenent is the last line. Annos Deus Maintenent, last line. Okay, you did not revise French. French किया था हमने. Honore de Balzac, Old Goriot, 3 characters. Old Goriot, who is also called Father Goriot, based on King Lear. Rastignac, hero, and Vautrin, villain. Rastignac is a newcomer. He learns from both of them and then realizes how to survive in Paris. Last scene, he's at some tough place, maybe at a cliff, looking at the city and says, "It's between you and me." Annos Deus Maintenent. Which book has the last line? Like a dog. Is it the English class? UGC-NET English class. What happened? Why not answering me? Like a dog. Trial, Kafka. What is the name of the salesman in Kafka's book, Metamorphosis? English literature, बड़ी बेवफा. रात भर रटो सुबह तक सफा. है ना? यही लग रहा है मुझे भी. दिवाली मोड में आ गए सभी, नवरात्रि मोड, डांडिया वांडिया ऑल. है जिया सर हो रहा है डांडिया? नहीं. अच्छा कुछ तो बताओ. चलो. What was the name of the work written by Mary Shelley? It was the part of a bet with Lord Byron and Frankenstein. In Frankenstein, who is Frankenstein? Victor Frankenstein. Is it a monster? Which book was published in 1742? Think. 1742, that is 1842. Okay, that has a character Squire B. Squire B is a famous character. Pamela, 1742. The subtitle of Relapse. Virtue in Danger. The Mistakes of the Night, subtitle of. She stoops to conquer. What is the name of the Queen of Fairies in Midsummer's Night Dream? Titania. Good. What is the name of the King of Fairies in Midsummer's Night Dream? King Oberon. The publication of Samuel Johnson's dictionary. 1755. Samuel Johnson wrote Lives of Poets. How many poets were there? Who has written the famous work? It's a neoclassical tragedy published in 1713. It is called Best Neoclassical Tragedy, 1713. When I taught, I told you just remember the title, no need to read. Cato, perfect. Battle of Blenheim. It inspired Edison to write a work.
campaign. Perfect. Who has written careless husband, tender husband? बहुत बढ़िया. How many essays were there in Spectator? 555. Fatal Falsehood and In Search of Happiness are two books written by. Fatal Falsehood and In Search of Happiness. Okay. Hannah More. Hannah More नहीं पढ़ा. Who has written Tess Wonder She Keeps a Secret? Another book, A Bold Stroke for a Wife. Susanna Centlever. What was the pseudonym of Susanna Centlever? Pseudonym? Astrea. Astrea. What was the pseudonym of Mary Lamb? Cousin Bridget. Tales from Shakespeare was published in 1807. Preface to lyrical ballads and lyrical ballads. What is the difference? Yes, preface बाद में आया था. आपको एक टॉफी भी गिफ्ट करना था, है ना? You remembered my birthday that day. जी याद दिलाना, भूल गया था. This side, Kartika, you tell me this. Spectator Club, Tatler, like they were part of two magazines, Tatler and Spectator. There were two more magazines by Samuel Johnson and Idler, Rambler and Idler. Publication. In which book we have a character Shylock? Barabbas. Barabbas was very rich. He was so rich that he was more rich than. What was the name of Barabbas' servant? What was the name of his daughter? In which book we have a villain and his name is? In which book we have a villain and his name is? Ready? Squire. Complete the, fill in the blanks. Squire what? Squire Thornhill. नाम में कांटे हैं, Thorn, याद रखना. Dr. Primrose, Vicar of Wakefield. Dr. Primrose, one of the girls, is being troubled by that rich man. Squire means rich man. His name Thornhill. नाम में कांटा है, Thorn. Please remember that. Vicar of Wakefield, who is the famous vicar? अभी तो बोला. Dr. Primrose. What is the name of the Chinese traveler who is writing letters to his friend in China? Citizen of the world. Name of the Chinese traveler. पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज्यादा आ सकते हैं. Lin Shi Altanzi. Right. Acha, tell me this. Name the writer who was locked by his landlady and Samuel Johnson saved him. Great, great, great. Name the cat who drowned in the bowl. N. Salima and Jara were there. Who drowned? Who has written where ignorance is bliss, it is folly to be wise? Thomas Gray. Which book? Where ignorance is bliss, it is folly to be wise. Ode on the distant prospect of Eton College. Where do we get this line? Let not ambition mock their useful toil, their homely joys. This line means rich people should not make fun of poor people. Let not ambition mock their useful toil. Okay, this work has a line, curfew tolls the knell of the parting day, and the plowman plots his way. बहुत बढ़िया. Pindaric ode was introduced by Abraham Cowley. After Abraham Cowley, who uses Pindaric ode in English literature? Thomas Gray. Progress of Poesy and The Bard are two books written in the Pindaric ode format. What is the difference between Horatian satire and Juvenal satire? We have talked about Juvenal satire in Modest Proposal. Horatian satires are normal satires for social purposes. You want to reform society, you are going for social satires. Juvenal satires, even if they are trying to reform the society, they are very crude, very hard. They'll penetrate your heart. They are very, harsh. Juvenal satire कैसे होते हैं?
जो मतलब ऐसा कमेंट जिसमें आपको लगेगा कि यू नो, कई बार ऐसा होता है कि किसी कमेंट पे आपका दिमाग खराब हो जाता है, आपको लगता है ये क्या बोला इसने, क्यों बोला. हेनरी फील्डिंग नहीं, मॉडेस्ट प्रपोजल, डैनियल डिफो. क्या लिखा था, सॉरी डैनियल डिफो ने रिप्लाई किया था, जोनाथन स्विफ्ट. Jonathan Swift wrote Modest Proposal. It was a reply to Essay on Projects by Daniel Defoe. So what was the reply? Jonathan Swift said, let's eat the kids of poor people so that the poverty will be eradicated. अब सोचो कल को आपको कोई कहे 150 करोड़ है, तो एक काम करते हैं, स्लम्स में से उनके बच्चे लेके आते हैं, नाश्ता बनाते हैं उनका, तो धीरे धीरे स्लम साफ हो जाएंगी, पॉवर्टी अपने आप खत्म हो जाएगी. कैनिबलिज्म. There are countries people eat human. One of the famous or infamous king, dictator of Uganda, Idi Amin, was notorious for this thing. It was said that he was mad and he would kill his enemies. The dead bodies, mostly especially the part of the brain, was being eaten by him. Even the world leaders were scared of him, meeting him, talking to him. Idi Amin, इंसान खा जाता था वो, और अपने दुश्मन का दिमाग निकाल के खाने का शौक था उसको. So what if we just promote it? It is quite possible in the coming future, next 50 years, next 100 years. That's what you study in post-humanism. There is a movie based on this concept that the poor people can sell the age and young people can buy, rich people can buy the age. There will be a system to survive. You will go for some small, operation kind of thing, then they'll take some DNA. 10 years of your age, it will be given to somebody who is a rich man but old. He will become 10 years younger, you will become 10 years old. Age transfer, what if it can be done? So इसमें दिखाया जाता है, they show this, that all the poor people who are hungry and who are already dead, either or this way or that way, they're going to die. So what they do, they go to rich people and say, take my age. So they take 30 years. So the rich widow are the young girls again, and these poor girls are widow and old again. These kind of concepts, a dystopian concept. Now tell me this, 1984, written by George Orwell, as we have taken it in multiple time reference. There is a famous line that keeps on being flashed. कौन सी line है? Big brother is watching you. Great. Timing of Norman conquest. Who killed Herald Hadara? Herald Hadara किसने मारा था? Who became the king of Anglo-Norman England in 1066? William the Third became the king of England in the third. 1688, William the Third. उससे पहले William the Conqueror, William the Silencer, and then William the Third. Queen Elizabeth belonged to a dynasty. Charles I, Stuart dynasty. Restoration of Charles II. When Charles II came to throne in 1660, he came with some basic acts. Which act blocked all private meetings of Puritans? Conventicle Act, religious act. All meetings, Puritans, सब ban हो गया. Plus everybody had to take license from the church. Licensing Act in England came in. Licensing Act. There was a writer behind this act, and I told you that writer used to make cartoons of Robert Walpole. Prime Minister Robert Walpole को cartoons के through he would expose. So that writer, Henry Fielding, बहुत बढ़िया मेरा, Henry Fielding, 1739, the licensing act, it came because of him. 1737 proposal was finalized. 1739 it was implemented that now you cannot make cartoons of big people or politicians. आज भी है, अगर आप बहुत बड़े लेवल पे किसी का कार्टून वार्टून बनाते हो ना, तो you'll be targeted. Bala Saheb Thackeray does the same thing. He used to do it in Samna, right? Now tell me this, Henry Fielding and his brother, apart from being writers, they were also doing something. What was their profession? Justice. They were the judges. They are credited with police reforms.
उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स बहुत सारे किए हैं, उनके अमेंडमेंट्स हैं. व्हाट इज मैग्ना कार्टा? In which book we have Millamant and Mirabelle? Why Lovewit leaves the city in the opening chapter? Who is Captain Face actually? Doll Common appears in Cut Beard, Epicene, another title. In which book we have a reference of a woman, she wants to be reunited with her husband, husband has reached the God, women undertakes the journey to meet the God. Pilgrim's Progress. Which book is called Prose Paradise Lost? Holy War. Grace Abounding is autobiographical. Name the two books Bunyan's wife brought in dowry. Plain Man's Path to Heaven and Practice of Piety. Name the writer who has written Complete Angler. Timing, इसकी timing important है. Isaac Walton 1653 Complete Angler. Anatomy of Melancholy timing. What are the two solutions to cure melancholy? Love and faith. Question of exam, right? Now tell me this. Religio Medici, Religion of a Doctor, written by. Timings. Dryden 1642. Dryden wrote a work to celebrate the death of Cromwell. Book. Heroic Stanza. Astrea Redux was written to celebrate the arrival of Charles II. What do you mean by Annus Mirabilis? Who has written Hudibras? Hudibras is based on Don Quixote. Don Quixote is? What is Don Quixote actually? Writer? Don Quixote is a character. So what is the real name of Don Quixote? Alonso Quijano. And who is the man behind this book? Cervantes, Miguel de Cervantes. His book is Don Quixote. In this we have Alonso Quijano. Alonso Quijano has a servant called Sancho Panza. Sancho Panza inspired a character by Henry Fielding. क्वेश्चन है नेट के ये रिपीटेड क्वेश्चन है नेट के किसी भी अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन होगा ये. हेनरी फील्डिंग, पार्सन एडम्स, जोसेफ एंड्रयूज. जोसेफ एंड्रयूज के साथ एक फनी फार्मर कैरेक्टर है. Abraham Adams, also called Parson Adams, is based on this. Tom Jones has a girl, Sophia Western. Sophia Western is based on Henry Fielding's own wife. Fielding की अपनी खुद की वाइफ के ऊपर वो कैरेक्टर बेस्ड है. Now tell me this thing. Tom Jones, Henry Fielding's famous work, it depicts the London life. How Tom Jones is introduced in the opening chapters. He's a foundling. He is found in the bed of his uncle. What is the name? Squire Elworthy. तो तुम जितना याद करो उतना तो मैं भूल के बैठा हूँ यार. ऐसा मत करो, पढ़ो. 4 दिन की छुट्टी दिख रही है मुझे क्लियरली. I was not there, but paper 1 teachers are doing their job. Now again I'll be taking long classes till Thursday morning. Paper 1 syllabus is not that big. English syllabus, what I want is to finish as soon as possible so that I can deal with those random questions. There are so many questions asked which are not directly connected to syllabus. जो हम क्लास में कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी ज़्यादा है. जो आप यहाँ पढ़ोगे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ोगे. हम नॉर्मल सिलेबस नहीं पढ़ने वाले हैं, ऑर्डिनरी सिलेबस नहीं करेंगे. नहीं तो जो फ्रेंच जर्मन अलग से करवा रहा हूँ ना, उसको नॉन ब्रिटिश लिख के ना सिर्फ 20 राइटर एक साथ करा के छोड़ देता सारे मिला के. हम औरों से ज़्यादा पढ़ रहे हैं. बट दिस टाइम माई टारगेट इज टू हैव मोर डेज. मतलब एटलीस्ट 10 दिन मैं और बचा लूँ. वो 10 दिन क्यों बचाने हैं मुझे? सम एक्सट्रीम रैंडम क्वेश्चन. गे लिटरेचर. अब टेक्निकली गे लिटरेचर इज नॉट बीइंग नॉट द पार्ट ऑफ डायरेक्ट सिलेबस. In fact, queer studies is not the part of direct syllabus. In fact, feminism is not the part of direct syllabus. Hey, nahi. But when they say 20th century contemporary theories, so contemporary theory they can ask anything. In that case, the others will okay, they'll deal with structuralism, post-structuralism. We have to go for everything. And when I will teach feminism, I cannot stop
विथ सम बेसिक फेमिनिज्म। जब मैं पढ़ाऊंगा मुझे आपको लेटेस्ट टर्म्स पढ़ानी ही है, फोर्थ वेव डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, फोर्थ वेव की सारी टर्मिनोलॉजीज करेंगे क्योंकि वो पेपर में आती हैं। बट उसके साथ हम क्वेयर स्टडीज में जाएंगे। जब हम क्वेयर स्टडीज में जाएंगे तो नाउ दे वांट अस टू स्टडी गे लिटरेचर सेपरेटली। 2 बार रिपीट हो गया, जून एग्जाम में इट वाज देयर, अगेन इन अगस्त गे लिटरेचर वाज देयर। इट मीन्स समबडी हु इज सेटिंग द पेपर हैज गे लिटरेचर इन हिज माइंड। Instead of asking as a queer literature, they are mentioning it from men's point of view, gay literature. So there are chances, if you are smart, they can ask lesbian literature. अगर आप एक sexuality base पे चल रहे हो तो हमें उसके लिए भी टाइम बचाना है। Then Donna Haraway. Do you know ma'am is in direct touch with Donna Haraway? Donna Haraway is not keeping well, थोड़ी तबीयत खराब है, हॉस्पिटलाइज थी वो बीच में, अदरवाइज उस दिन कॉन्फ्रेंस में उनका भी स्पीच होना था। तो she has written Cyborg Manifesto. It's a Bible of future studies. Cyborg Manifesto has been asked 3 times, including Jamia PhD entrance exams. हम क्या करेंगे, हम सिर्फ नाम नहीं लिखेंगे, हम उसका क्रक्स क्या है, प्लस हाउ मेनी अदर बुक्स आर कनेक्टेड टू सेम कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज विच आर एडवांस लेवल, हमें उनमें जाना होगा। So this is what I want, that apart from NET and JRF you have some more knowledge, plus you are prepared for the worst exam. I am never happy with the easy paper. कभी भी मेरे कोई पुराने वीडियोस कहीं देखना, अगर लिखा है ना पेपर इजी था, मैं हमेशा बोलूँगा आई वाज नॉट हैप्पी, क्योंकि आप उससे ज़्यादा अच्छे में तैयार हो, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बट देयर व्हाट आई नीड फ्रॉम यू इज, इट्स ऑब्वियस, मैच माई स्पीड, कॉप अप विद दीज थिंग्स। अभी लास्ट क्लास से पहले 3-4 दिन का गैप हो गया, इंक्लूडिंग सैटरडे संडे, 4 days आर इनफ। अपने आप को बोलो दैट वन डे आई विल गो टू एग्जाम क्लास एंड आई विल बी प्रिपेयर्ड विद ऑल रोमांटिक्स एंड वॉट एवर द राइटर्स वी हैव डन, नॉवल एंड ऑल, हर चीज जो हो चुकी है। इफ आई एम एट योर प्लेस आई विल पुट मोर एफर्ट्स इन रिविजन, क्योंकि आई कांट अफोर्ड टू मिस क्वेश्चंस इन एग्जाम। दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो इन इंडिया। सबसे बुरा क्या होता है, तुम बहुत मेहनत से इतने मार्क्स लेके आओ और इतने मार्क्स से फेल हो जाओ, कोई नहीं देखेगा दैट ओके दिस मैन हैज दिस मच नॉलेज, वो क्या बोलेंगे, अरे कुछ नहीं आता है, फेल हो गया। एक क्वेश्चन गलत हुआ, फेल हो गया ना, कोई नहीं पूछेगा कि नहीं नहीं दिस पर्सन नोज अ लॉट। आई नो अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट शी इज इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसका नेट नहीं हो रहा है। अब नेट क्यों नहीं हो रहा, वाई शी नॉट एबल टू क्रैक नेट? उसके मम्मी पापा दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। आई थिंक वंस आई टोल्ड यू बातचीत में, वो मुझे बोलते मेरे, दे आर माई सीनियर्स, विनीत इसका करवा यार, कैसे यार, कुछ कर यार विनीत इसका करवा। आई सेड प्लीज आस्क हर टू सिट इन माई क्लास, नेट इज डिफरेंट, यू आर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड हैज अ डिफरेंट सिस्टम, यू आर अ फेमिनिस्ट राइटर, योर बुक हैज बीन पब्लिश्ड इन लंदन, बट इट्स ऑल डिफरेंट। अगर यहां आना है, नेट के एग्जाम को देना है, तो नेट में थाउजेंड्स ऑफ राइटर्स आर देयर विद अ रैंडम क्वेश्चन, दे कैन आस्क एनीथिंग, तो फिर पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका जो कॉम्पिटिटिव पैटर्न है बहुत टफ है, नेट इज नॉट इजी। बट द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल दैट यू विल आस्क मी, सर व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन नेट? इट इज द सिलेबस which is not clearly defined and they have a leverage to ask anything. So when they say anything, anything. Who is Bob Dylan? Singer. Nobel Award, Literature Nobel Award. Bob Dylan has been asked in an exam. अब आप बताओ, अगर बॉब डायलन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, was it the part of syllabus? And if it is the part of syllabus, please mention it that literature through music. एक वो लोकगीत नहीं है, वो कल्ट क्लासिक है। जैसे अगर मैं सोचूं कि चलो लेट्स कनेक्ट बॉब डायलन, कुछ तो बनना चाहिए बॉब डायलन का, so we'll say, see, we are talking about the modernized version of subcultures, and Bob Dylan was leading a subculture, so it's a part of culture studies. But then can I teach you every म्यूजिशियन लाइक दैट? फिर तो जिम मॉरिसन पढ़ाना पड़ेगा मुझे, जिसको देख के रॉकस्टार मूवी कॉपी हुई है, आई ब्रिंग अ गिटार एंड ऑल, कि सच का सबक सिखाए, एंड देन बॉब मार्ले, फिर तो मुझे रंगीन लाइट्स लगवानी पड़ेंगी, गांजा गांजा, क्योंकि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सब कल्चर्स इज देयर। हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड?
Principle of uncertainty. Heard about it? Chemistry की term है. Principle of uncertainty, if I'm not wrong, is the part of chemistry. आपके नेट का क्वेश्चन है. It's a question of your net exam. Connect कर गया. When I was solving paper and after coming back, because you know I got shocked. अरे ये कौन सा principle of uncertainty है? मुझे कैसे नहीं आता है? तो I got back laptop लेके. जब भी I put enter, science, सब science no literature science. ढूंढ रहा हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा literature से. Finally I forwarded it to बहादुरी sir. मैंने कहा सर ये क्या है? What is this and how it is connected to culture studies से जुड़ती है? वो साइंस का क्वेश्चन है. माई ब्रदर इज इन साइंस, फिजिक्स में. आई आस्क्ड हिम, ही सेड हाँ साइंस का क्वेश्चन है. क्वेश्चन वाज इजी. प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय सम मार्टिन हीमर, ऐसा कुछ कैरेक्टर है. हाँ ऐसा कुछ. बट इमेजिन, इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सो दे आस्क रैंडम क्वेश्चंस. फॉर दैट रैंडम क्वेश्चन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद द मेन क्रक्स. एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम, आई टेल यू अगेन, your 90% competition will end here. ब्रिटिश हिस्ट्री ठीक से आएगी नहीं, क्रिटिसिज्म बेसिक रट्टा मारा होगा, दे वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन. एंड इफ द क्वेश्चंस आर इन 3-4 लाइन्स इंग्लिश, दे वोंट अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज. दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी. देन पीपल फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटीज और सम पीपल हु हैव टेकन कोचिंग क्लासेस, बिकॉज अब बहुत सारे लोग वो पढ़ा रहे हैं जो यहाँ की क्लासेस से पढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास वो चीज़ होगी. ये आपको बचे हुए 10% जो है वो यहाँ तक कॉम्पिटिशन देंगे. हम यहाँ जाने वाले हैं. इट्स नॉट ओनली बिकॉज वी आर गोइंग टू बीट देम, आई डोंट काउंट देम. वी आर गोइंग टू बीट एवरीबॉडी. वी आर गोइंग टू सेट एन एग्जाम टू क्रैक. हम अफोर्ड नहीं कर सकते एग्जाम में फेल होना. कर सकते हो अफोर्ड? खाली यहाँ जाना वापस? तो आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स. ऑल आई नीड फ्रॉम योर साइड इज यू गिव मी योर बेस्ट. आस्क योर सेल्फ, आर यू गिविंग मी बेस्ट? मुझे तो फालतू क्वेश्चंस पता है. व्हेन डिड कोको कोला अराइव इन ब्रिटेन? दैट इज द क्वेश्चन ऑफ कल्चर स्टडीज. ये भी क्वेश्चन है, कोको कोला ब्रिटेन में कब आई? हाउ इज इट रिलेटेड टू लिटरेचर? इट इज रिलेटेड टू लिटरेचर. हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट दिस? कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, तीनों के कलर सेम है. व्हाई? एटलीस्ट इफ देयर आर 3 बिग ब्रांड्स, दे कैन हैव अ चेंज ऑफ कलर्स. कभी आप चाहोगे आपका प्रोडक्ट दूसरे की प्रोडक्ट की कॉपी लगे? लेट्स मेक इट इजी. 1 glass, 2nd glass, 3rd glass. Okay, you know my drawing. One has Coca-Cola, one has Thumbs Up, one has Pepsi. Will you be able to identify by the color only? No. अगर रैपर्स हटा दिए जाएं तो आप कलर से पहचान सकते हो कि कोका कोला कौन सी है, पेप्सी कौन सी है, थम्स अप कौन सी है. टेस्ट आई नो, थम्स अप थोड़ा हार्ड हो जाएगा शायद, है ना? If I'm not wrong. अभी बात करो तो मन भी कर रहा है पी लूं. Why these 3 big companies are not changing colors? Why? क्या? No, but seriously, if you want to do something different, we say do things different, right? So if you want to be different, you can change your colors like Mirinda and others. उन्होंने कलर इसलिए चेंज किया क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं थी इनके बीच में विद दिस कलर, तो उन्हें थोड़ा सा फेमिनिन पॉइंट ऑफ व्यू से कलर बनाना था, तो मिरिंडा वेंट इन ऑरेंज. दैट्स अ बिजनेस स्ट्रेटजी. देन सम अदर्स एंड ऑल. व्हाई द लीडिंग वंस आर हैविंग द सेम कलर्स? नाउ इफ यू हैव अ ड्रिंक सेम कलर, आई डोंट नो सेम कलर में है या नहीं है, विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई? अगर तीनों चारों को मिक्स करके आपस में छोड़ दिया जाए तो? नाउ पीपल हु कांट ड्रिंक, हु आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक फॉर कल्चरल रीजंस, morality grounds, family pressure, gender issues, they have a desire to do the don't, and their desires are being gratified with that color. बचपन में having Coca-Cola, Pepsi in your hand in a transparent glass, you must have pretended to have it. And Jaslyn got emotional.
जसलिन कह रही सर को कैसे पता चल गया? आई यूज टू डू दिस, मैं पीता नहीं, पिलाई गई है। वाई डिड वी डू दैट? बचपन में हमने किया है, कभी ना कभी किया होगा ना, ऐसे बोतल लेके, प्लास्टिक की बोतल लेके एक्टिंग तो की होगी। वाई डिड वी डू दैट एक्टिंग? वाई वी हैड दिस ओके एंड हाँ आई डिड। पेप्सी की नई नई बोतल आई थी ना प्लास्टिक वाली, तो मैंने वो कवर हटा दिया बीच से। नाउ इट वॉज जस्ट अ बॉटल एंड अ ब्लैक थिंग एंड आई नॉक्ड माई गेट और मम्मा के साथ ऐसे करके, एंड मम्मी तो सीरियस हो गई। मैंने बोला हाँ जोड़ू मैं सूंघ लो यार, नहीं है। We did that thing because we have that deep desire and they just gave us a solution. So when you drink Pepsi, no religion is harmed. This is the part of your psychoanalytic theory. ये जो बड़े brands है ना, ये culture studies का भी part है. They read your psychology first. They sell things by blackmailing you साइकोलॉजिकली। अभी दिवाली आ रही है, तो जिसको जो बेचना है वो उसमें साइकोलॉजी डालेगा, इमोशन डालेगा। हस्बैंड को आपने एक बढ़िया सी बाइक गिफ्ट कर दी, हस्बैंड बहुत खुश। अब जितनी लेडीज घर पे टीवी देख रही होंगी ना, उनको लगेगा यार बात तो सही है, मैंने हस्बैंड को बेचारे को परेशान कर रखा है, चल एक बाइक तो बनती है। अब वो भले हस्बैंड की कार्ड से खरीद के उसको दे दे, फायदा किसका हुआ? ऐसे ही फिर हस्बैंड को दिखाया जाएगा, दिस दिवाली मेक हर फील स्पेशल, डायमंड्स। बट मेक हर फील स्पेशल, हस्बैंड को स्पेशल फील कराओ, उसमें डायमंड्स की क्या जरूरत है? जस्ट स्पेंड गुड टाइम। दिस इज हाउ दिस सेल ऑल योर गुड एरियल प्रोडक्ट्स, दाग अच्छे एंड ऑल दीज काइंड ऑफ। दे हैव क्यूट किड्स। छोटा सा बच्चा नाली में कूद रहा है, फिर वो बोलता है तेरी मम्मी मारेंगी? नहीं मामा नहीं मारेंगी, मामा के पास 10 रुपए का व्हील है नींबू वाला। रियलिटी है मम्मा धोती थी, मुझे तो अभी नहलाया था, बाहर मिट्टी में खेल के आ गया, मम्मी ने पिटाई कर दी। हाँ, कपड़े से पहले बच्चा धुलेगा। बट दे ब्रिंग द क्यूट किड्स। इन शॉर्ट, नाउ we have reached to a level which is its consumerism. So the Marxist reference in culture study, this is also called neo-Marxism. इसको neo-Marxism भी कहते हैं। The world is divided in two parts. Marxist, basic Marxist theory. The world is not suffering from casteism. World is not suffering from gender issues. World is not suffering from religious issues. World is suffering from have ones, have not ones. You can just understand it in an easy way. Rich, poor. Have you ever seen casteist issues in plane? हवाई जहाज में बैठ के कोई बोलेगा मेरी बगल वाली सीट पे ब्राह्मण बैठना चाहिए? चलता वहां पे ये हवाई जहाज में कर सकते हो आप, उतार देंगे वो। वाई? गांव में मिल जाएगा आपको, गांव के अंदर कास्टिज्म अभी भी है, प्लेन में नहीं मिलेगा। कॉस्टली 5 स्टार्स में, हैव यू एवर सीन 5 स्टार्स रिटन दैट ओनली अपर कास्ट अलाउड? It's money. So if you're rich, no casteism. If you are rich and having that rich life, nobody will fight for Hindu Muslim. Have you seen people killing each other, firing at each other in 5 stars? आपस में लड़ रहे हैं, स्लोगन्स लगाते देखें कभी किसी को 5 स्टार में? बजरंग दल जब पीटने निकलता है 14 फरवरी को, तो दिल्ली में थोड़ी आता है वो, साउथ दिल्ली में आके पीटो आप 14 फरवरी को। कौन रोकेगा सबसे पहले? मॉल, मिनिस्टर्स के पास फोन जाएगा कि सर हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? अगर आप 14 फेब को कपल्स को रोक दोगे तो हम ये जो चॉकलेट ले लेके बैठे हैं 5-5 हज़ार की, कहाँ जाएंगे? सो व्हेन मनी मैटर्स, मनी स्पीक्स, नोबडी केयर्स ऑफ ग्रामर। पॉइंट इज यू हैव इट, दे डोंट हैव इट। नाउ देयर इज अ नीड ऑफ सर्वाइवल, सो यू नीड फूड, यू विल बाय इट। बट इफ यू जस्ट सप्लाई समथिंग विच इज एक्चुअली द एसेंशियल, हाउ विल यू मेक मनी? क्रिएट, डिमांड्स को क्रिएट किया जाता है। हाउ टू क्रिएट द डिमांड?
they'll bring Virat Kohli, and Virat Kohli will drink some black kind of water, alkaline water, and then some articles, newspapers, print media, PR. विराट कोहली पीते हैं 6,000 रुपए लीटर बोतल, रहते हैं फिट 10 साल जवान. नीड क्रिएटेड. तो ऑल द रिच पीपल, हाँ यार हम भी अफोर्ड कर सकते, हम कोहली से कम थोड़ी हैं, चलो. फिर एक साथ में आएगा सब्स्टिट्यूट, दैट इट्स ओके इफ यू कांट गेट द सेम विराट कोहली वाटर, इट इज ऑलमोस्ट देयर, सो जस्ट यू बाय सम बिल्सेरी, बिस्लेरी का बिल्सेरी बन जाएगा. नीड क्रिएटेड. ब्रांड्स, एप्पल, आप कितना महंगा फोन खरीद लो, 70,000 80,000, अगर उस पर आईफोन का एप्पल का टैग नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा फ्लॉन्ट में कि कोई साथ वाला एप्पल वाला ना बैठा हो. उन्होंने ब्रांड स्टैब्लिश कर दिया. एंड इट्स नॉट ओनली एप्पल, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स वी डोंट इवन नो. ऐसे ब्रांड्स भी हैं. आई जस्ट हर्ड अबाउट दिस लुई विटॉन के बारे में कि वो जला देते हैं अपने बचे हुए पीसेस, बट वो कभी सस्ता नहीं बेचते. सो दे डू रियली डू दिस. विल यू डू इट? लुई विटॉन, मैंने भी नया नया अभी नाम सीखा आफ्टर मैरिज, उससे पहले मुझे भी नहीं पता था सब. Even if they don't do it, the news is enough to make it a brand. कोचिंग सेंटर्स भी ऐसा करते हैं. There are so many coaching centers वो एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं. उससे क्या होता है? उससे फैमिली थिंक्स this coaching is more serious and they make it a prestige issue that my kid should pass the entrance exam. उससे और ब्रांड वैल्यू बन जाती है. अरे उसमें एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है, ऐसे नहीं होता एडमिशन. आपको एंट्रेंस की जरूरत नहीं है ना. यू वांट टू कोच समबडी, सो ब्रिंग इट समबडी फ्रॉम द सॉइल ओनली, जीरो से लेके आओ. तो ये अब माइंडसेट क्या हो गया? कंज्यूमरिज्म. दिस इज ऑल कंज्यूमरिज्म. सेल एज मच एज यू कैन. और ये क्वेश्चंस आपके घूम फिर के पेपर में आते हैं. स्टुअर्ट हॉल का नाम सुना ही होगा आपने. दैट फेमस रेफरेंस आई गिव यू अबाउट द गल्फ कंट्री पेप्सी प्रमोशन एंड ऑल. ये सारे क्वेश्चंस सिलेबस के बाहर के हैं, बट दे आर बीइंग आस्क्ड. एंटी पॉजिटिविज्म क्या है? मैक्स वेबर कॉन्सेप्ट क्या लेके है? कंफर्ट जोन क्या है? विच इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट जोन. यू स्पीक इंग्लिश, समवन स्पीक्स पंजाबी, हाउ विल यू टॉक? How will you talk? How? Two things. If you are studying language studies, you will say, sir, we will need a common language. That common language will be called Pidgin. English in India is Pidgin. If I switch it to Tamil. So Tamil and Punjabi can talk if they have a common language, Pidgin, which is English in India. It is second language. It is your second language. It means you both are out of your comfort zone. If you can talk to somebody in Punjabi, but that somebody is not understanding in Punjabi, so you are switching to English. It is your second language. This is first language. So, okay, this is your also first language. A Punjabi person has a Punjabi first language, a Tamilian has a Tamil first language. Now both of them, they want to talk, so they are choosing a second language for both of them. He knows English, he knows English. English is Pidgin. Question of JNU descriptive exam pattern. Discuss the role of English as Pidgin in India. ये bridge है हमारे लिए. If you go to Chennai, you can survive because you speak English. आप कर सकते हो क्योंकि अब आपको डर नहीं है. Somebody somewhere will talk. मैं तमिलनाडु में एग्जाम देने गया था, चेन्नई में, माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. और वहाँ पे गर्मी थी, यहाँ पे सर्दी थी, वहाँ गर्मी थी. जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर आया ना, पसीना आने लगा. तो माई सेंटर वॉज इन कायदे विमेन मिलिथ कॉलेज, मिलिथ विमेन कॉलेज. एंड आई रिमेंबर दिस क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा. आफ्टर द एग्जाम वॉज डन, देयर वॉज एन ऑटो गाय. सो आई सेड, go to Marina Beach. My hotel was at Gandhi Beach and I forgot. I said Marina Beach and he started and 100 or something we must have spoken. उसके बाद we were not able to find my hotel.
30-40 minutes. And I'm asking Gandhi Beach, big hotel. I missed the name of the hotel also. उस होटल का नाम भी भूल गया मैं क्या था. और वो बेचारा, we both were not able to talk. I tried my gestures, no, big hotel, big parking, beach only 1 kilometer, walking, सब try किया. And he was speaking in Tamil. Name, hotel. So जब मुझे लगा कि कोई कुछ होने वाला नहीं है, so I asked him, take me to any big hotel. So एक कोई big hotel के आगे रोका उसने, and I thought कोई तो इंग्लिश बोलेगा अंदर. So मैं जाके बोला, excuse me sir, I need help. तो जो आदमी था वो ऐसे कुछ पूजा कर रहा था, and he turned and said, हाँ जी बोलो. The moment he spoke in हिंदी, मैंने कहा अरे यार thank God, सांस ली. मैंने कहा सर ना मेरे को इसको बताओ, वो होटल जाना है. कह रहा तो गांधी बीच पे. मैंने कहा अच्छा, जस्ट प्लीज टेल हिम. वो उन्होंने हिंदी में मुझसे बात की, उसको तमिल में समझाया. लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, either it is Hindi or English, anything that happens to be your second language for time is Pidgin. Now what is this in culture studies? ये तो language studies है, Pidgin, Creole, dialect, idiolect. What is it in culture study? It is your contact zone. Contact zone, a theory by Louisa Maria Pratt. Repeated question of exam. For others, it is out of syllabus. Louisa Maria Pratt, contact zone theory. Stranger King theory, third space theory, anti-positivism theory. ये बहुत सारे concepts हैं. Contact zone, first language is comfort zone. To establish a contact, you came in second language. If a Tamil speaking guy speaks in Tamil, he is in comfort zone. If another one Hindi speaking guy speaks in Hindi, he is in comfort zone. These are comfort zone. To establish a contact, suppose you're talking to each other, auto wala scene, same auto guy, auto wala scene. So how will you talk? You will have to talk. बात करनी पड़ेगी. चंदा, अचानक से यहाँ से गायब होके ट्रांसफर हो गया, अगर आप चेन्नई चले जाओ तो आप बात करोगे नहीं करोगे? बोलोगे ना? कैसे बोलोगे? Let's assume you don't know English and they don't know Hindi. अब हाँ, we'll say this, home, phone. हाँ, कर्नाटका में चले जाना फिलहाल, हिंदी बोलोगे मार खाओगे. अभी चल रहा है थोड़ा माहौल. You will have to talk. So will you be just talking spontaneously or you will be just like trying to talk? So आपका जो expression है spontaneous नहीं होगा. It means you are out of your comfort zone. और वो भी आपको समझने के efforts लगाएगा. That person will also put efforts. This is your contact zone. So whatever you will talk is contact zone. आगे समझ में? विक्टोरियंस की क्लास है और विक्टोरियन की क्लास में हम कुछ और पढ़ रहे हैं. ये मजा है ऑफलाइन पढ़ने का. Do you know the world is a contact zone? Now this is the famous line, the question of this exam. Justify the statement, the world is a contact zone. दुनिया ही contact zone में है. ये question exam. The world is contact zone. The world itself is a contact zone. A statement by Maria Lewis Pratt. Maria Lewis Pratt. The world is a contact zone. Did you understand that? दुनिया ही contact zone में है. You and me. Comfort zone or contact zone? Contact zone.
When I enter, what's the first word I say? Good morning. कभी ऐसे कभी आते ही बोल रहा हूँ, किसी दिन बोल रहा हूँ जय श्री राम, या किसी और दिन अल्लाह अकबर, कुछ और बोलता हुआ आ रहा हूँ. जैसे ही एंटर होता हूँ क्या बोलता हूँ? गुड मॉर्निंग. आई स्टार्ट प्लेइंग माई रोल. आई एंटर एज अ टीचर. इट मीन्स out of this gate I was in my different role, maybe my another comfort zone. The moment I entered here, I switched to a role which is a contact zone for me. मैं अपने घर में नहीं हूँ इस टाइम, तो घरेलू भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकता. I can't use my normal way. I'll have to be a teacher only. You come to the class, the moment you enter the class, you become a student. So you follow discipline, behavior. I am following a rule, regulation, system. We both are following system, so the class is also a contact zone. This is with the world. It's not only with the language, it is actually the communication. ये communication है. If two friends want to leave the class, one does a gesture and another one says, that is contact zone. How it is contact zone? Because they were not comfortable in comfort zone to openly say, let's go. So what did they do? They came out of their comfort zone and made eye contact and said, let's go. The world is in contact zone. Did you understand this? ठीक है? तो लैंग्वेज के साथ साथ पूरा आप कम्युनिकेशन या जो भी है वो कर सकते हो. Now let's get back to Victorians, the great Victorians. Greatest Victorians. The first writer we were dealing with, Lord Alfred Tennyson. (1809 to 1892), and I told you why this man is called father of Victorian poetry.